Yo, hi guys. So, welcome to our special edition of the Real Legends in this boring international break. So, कैसा चल रहा है भाई? आज हमारे साथ नया बंदा है संघर्ष. संघर्ष से स्टार्ट करते हैं. संघर्ष कब से फॉलो कर रहे हो रियल मैड्रिड और क्यों कर रहे हो? आपकी आवाज संघर्ष, नहीं आ रही। you are not audible. तो जब तक संघर्ष शॉर्ट करते हैं. So our topic today is बहुत बार क्वेश्चंस आ रहे थे यार अपने को लास्ट स्ट्रीम में शांतनु भाई. हाँ बार बार प्रणय और ऋषि कह रहे थे कि हमें आंसर करो, कार्लो बेटर है या जिडान बेटर है. तो हमने सोचा इस पे हम स्पेशल पॉडकास्ट ही रख देते हैं पूरा 1 घंटे का. हाँ यार, आई थिंक अगर लास्ट 20 years देख ले, अगर 21st century देख ले, the two managers who come to mind for Real Madrid, the most successful managers, has to be Ancelotti and Zidane, right? So I think, and given that last 10 साल में जो भी हमने जीता है, more or less उन दोनों के अंडर ही जीता है. I think that's a very fair question, and to be honest, even I don't think I have an answer who's done a better job, but hopefully after the podcast we can come to some sort of a conclusion कि क्या differences रही हैं, and for those who started following Real Madrid recently, maybe it might be good for them to understand what are the differences between Ancelotti and Zidane. So basically, हम करेंगे क्या? We'll talk about their careers at Real Madrid mostly for the first half, and of course take questions from the chat. But then we'll also try and rate them on a few important characteristics which we think, define a manager, especially at Real Madrid. So obviously we'll take comments from chat as well. So once we ask a question, so would be great if everyone gives an answer key. Who do they think is better, Carlo or Zidane, right? And let's keep it interactive. Yes. So चलो आपसे शुरुआत करते हैं. राज आपने तो शायद जिडान का एरा से स्टार्ट किया है, राइट? देखना. हाँ, मैंने एक्चुअली जब जिडान वापस मतलब थर्ड पीट का फाइनल पीट था तब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था जिडेन को, एंड लाइक मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा फुटबॉल के अंदर नहीं था. आई यूज्ड टू जस्ट वॉच इट एंड एंजॉय इट. बट जब धीरे धीरे जिडेन वाज गोइंग 2020 या 2021 में गया था, राइट? तो तब से मैंने थोड़ा मोर इंटरेस्टिंगली देखना स्टार्ट किया था जब चेल्सी से हारे थे. तो लाइक मैंने जिडेन को उतना तो नहीं देखा है, बट कार्लो एंचेलोटी को लाइक आई हैव स्टडीड क्वाइट वेल. तो लाइक या, एंड इन माय ओपिनियन. नहीं, मैं बस बोल रहा था, वेलकम देव एंड प्रणय, वेलकम गाइस. वन मोर थिंग भाई, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना स्ट्रीम को, सबसे जरूरी. यूट्यूब पापा को खुश रखना है. एनीवेज, मतलब शांतनु आपका आई वुड से फुली रियल मैड्रिड देखना आपने बताया हुआ है 2008 के राउंड स्टार्ट किया, बट फुल सीजन जिसको कहते हैं, पूरा लीग गेम, पूरा लीग सीजन 38 गेम्स, आपका वो कौन सा था? बिकॉज मेरा आई थिंक मरीनियो के आने से 1 साल पहले का था. आई थिंक तब वो था, पेलेग्रीनी था मैनेजर. I think वो probably at least, if not full, at least 3/4 of the season I watched, especially Champions League में भी. So वो था, and then I saw Mourinho come in. I more or less watched all games of Mourinho under Real Madrid, or Real Madrid under Mourinho, and then finally Ancelotti came in, and then we had a bunch of managers who didn't work out, and then Zidane came in, and then we had Ancelotti again and Zidane again. So it's been a roller coaster, but I did see both very well. I remember both Ancelotti's and Zidane's, both their stints. So yeah. संघर्ष आपका सॉल्व हुआ माइक? नहीं आ रहा. एक बार आप रिजॉइन करके देख लो.
राइट माइक इशू, हाँ। मैंने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन इसलिए पूछा बिकॉज मेरा मैंने पेलेग्रिनी वाज द फर्स्ट सीजन जब मैंने रियल मैड्रिड फॉलो स्टार्ट करी थी। पेलेग्रिनी का फर्स्ट सीजन, देन मोरिन्यो, बट एक्चुअली जो होता है ना कि आई हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल गेम, दैट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डेसिमा सीजन, और जब कार्लो पहली बार आया था। एंड बेसिकली मेरी उस समय बॉल नॉलेज बहुत घटिया थी। सो आई वाज व्हाट 14 15, और मोरिन्यो गया था। आई यूज्ड टू लाइक मोरिन्यो एंड आई वाज लाइक कार्लो एंचेलोटी कौन है भाई, ये कहाँ से आ रहा है, why are we sacking Mourinho mutually, why is Mourinho going, why is Carlo coming, है कौन कार्लो basically, that was my opinion। और कार्लो was the first season जो मैंने full 38 की 38 games in a league season देखी थी। वहाँ पे वहाँ से एक कार्लो की जो अटैकिंग फुटबॉल थी, प्लस जो ऑफिस 2014 में आने वाला था वो तो पता नहीं था किसी को। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मुझे लगा था हाँ, ये फुटबॉल, ऐसी अटैकिंग फुटबॉल होनी चाहिए। यार जब एंचेलोटी आया था ना, मतलब एट दैट पॉइंट, उससे पहले मैंने उसको ज़्यादा नहीं देखा था। ऑब्वियसली मैंने मिलान की हाइलाइट्स देखी थी एंड व्हेन ही वाज एट चेल्सी उसको देखा था। चेल्सी, बट मोरिन्यो का लास्ट सीजन वाज वेरी you know डल। tumultuous for us. Not just dull, it was काफी डिजास्टर। ड्रेसिंग रूम में इश्यूज थे। समझ नहीं आ रहा था किस डायरेक्शन में अब टीम जा रही है, especially after that Bayern loss and everything, and then we lost to Dortmund again the next season in the semi-finals. Given that, फर्स्ट पॉइंट वाज आपका एटलेटिको से बर्नाब्यू पे हार गए थे फाइनल। इस पर लास्ट गेम वही थी ना उसकी फाइनल हाँ के। हाँ, जिसमें आई थिंक रोनाल्डो को रेड कार्ड रोनाल्डो मिला था, गॉट किसी रेड, को। रोनाल्डो रेड हाँ, एक्स्ट्रा टाइम। एग्जैक्टली। सो वो, और कैसियस के इश्यूज चल रहे थे, रोनाल्डो का उसके साथ थोड़ा इशू चल रहा था, काफी इश्यूज चल रहे थे व्हेन एंचेलोटी वाज हायर्ड, एंड देन एकदम से आया एंड देन वी स्टार्ट प्लेइंग सच ब्यूटीफुल अटैकिंग फुटबॉल in the first stint। हम लोग, I remember we went to the United States for the pre-season friendlies, and इतना सही फुटबॉल हम खेल रहे थे that I was very excited about the coming season जब Ancelotti आया था। And I think the first major game that I remember was the first El Clasico. We lost that, but still we played really well. There were quite a lot of positives, so there was hope that we can do well. और आप अटैकिंग की बात कर रहे हो, वैसे रजत, राज भाई आपके लिए कि क्या हुआ था अपना 2012 तक was हाँ all हाँ। play was going through Ozil, right? और हमने हम्म। क्या किया था, कार्लो आया था, इट्स अ न्यू कोच बेसिकली, और हमने ओजिल को हम्म। निकाल दिया था एंड पंटेड ऑन बेल जो लेफ्ट विंगर था, हम्म। और रोनाल्डो हमारे पास ऑलरेडी लेफ्ट विंगर है, हम्म। और वी गेव दैट टीम टू बेसिकली कार्लो इन हिज फर्स्ट सीजन। बेसिकली हमने जो उसका मेन फ्लो था वो बिगाड़ दिया, और दो प्लेयर्स जो बिगाड़ सेम दिया। पोजीशन पे खेलते हैं उसको डाल दिया हम्म। था। और स्टिल कार्लो केम अप विद सच प्लान्स। कार्लो एक समय पे डी मारिया, बेल, बेंजेमा, रोनाल्डो सबको चारों को साथ में खिलाता साथ में खिला, 2014। हाँ। हाँ, तो वो अटैकिंग फॉर्मेशंस जो स्पेशली सबको याद आए थे चैंपियंस लीग में, शाल्के गेम्स, गैलाटासरे गेम्स, वाज वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच। अरे ये मतलब मैंने ये चीज नोटिस किया बिटवीन जिडेन एंड अपना एंचेलोटी। मतलब इन लोगों की मैन मैनेजमेंट बहुत प्यारी है। लाइक जिस हिसाब से ये लोग मैनेजमेंट करते हैं प्लेयर्स की, एंड दे लाइक मैंने थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी थी, एक इंटरव्यू देखा था टोनी क्रूज का। उसमें ही मेंशन कि अपना सेमीज में सिटी के खिलाफ जो सेकंड लेग था बर्नाब्यू में, उसमें आफ्टर द फर्स्ट लेग, आफ्टर द फर्स्ट हाफ, एंचेलोटी गोज टू मार्सेलो एंड क्रूज एंड ही आस्क कि भाई तुम्हारे हिसाब से किसको सब इन करना चाहिए मेरे को। एंड दिस इज द टेस्टामेंट कि उसको कितना मैटर करता है कि उसके टीम के सीनियर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, क्या ओपिनियन है मैच को लेके। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। जब अपना रोड्रिगो आया था एंड देन ही स्कोर्ड 2 बैंगर्स, तो लाइक या आई रियली लाइक दिस फैक्ट which अबाउट देम। सी दोनों के बहुत, पहले ये देव का एक क्वेश्चन नहीं ये है, कमेंट है। आई एग्री देव,
when and Carlo came in the beginning, जब Mourinho छोड़ के गया था, there was a lot of player changes as well that was happening. So as Tushar already said, हमने Ozil left, we got Isco, we got Bale, है ना? So there were Higuain a lot left. of Higuain left. We top striker तो I don't think किसी को लिया था हमने, but at least कोई main striker तो नहीं लिया था. Then Bale came in. So a lot of personnel changes was taking place. ठीक है, so काफी काफी बड़ी changes आ रही थी टीम में, and Ancelotti has a favorite formation, as you said, 4-4-2 diamond या 4-3-2-1, जो अभी हम Real Madrid में देख भी रहे हैं, but he did not try to change. He tried to fit the best team possible उस समय, but given that you have Bale, Benzema and Ronaldo, he did try to keep it as a 4-3-3, because that brings the best out of the BBC, and we already saw the three of them did an amazing job in the first year itself. Definitely. Bale was a hit. They were playing well together, and we became a devastating team, beating uh, Bayern को उसी season हराया था ना हमने, beating Bayern Hmm. in the semis 5-4. at Allianz 4-0 whatever. So there was no need to play a 4-2-3-1 kind of situation, because you don't want Ronaldo and Bale to come back and defend. So it was he did not try and implement his favorite formation there until and unless James came into It the was picture. needed. Then he tried to change, but uh, first stint में तो at least Carlos stuck with the 4-3-3, and then जब Cruz, Modric और Casemiro आ गए तो फिर तो उसने बिल्कुल ही नहीं चेंज किया. What else do we have? इससे एक पैरेलल याद आया आपका Mhm. शांत भाई, जो आप कह रहे थे कि जब कार्लो आया, it was changes going on, we were not in a good form basically, last season was not good. Similarly, when Zidane came in, our season was previous season and current season was shocker. I won't say shocker because that season we were still competing on all fronts. Or the transfers didn't happen basically. कोई big move नहीं था that season, and Zidane just came in. और उस season I think maybe most of the people maybe write off Madrid कि इस season Madrid won't be achieving much. But again, वही जैसा 2014 में था कार्लो के साथ, फर्स्ट सीजन से डान काफी Definitely. बैलेंस ड्रॉ कर सकते हैं उससे. And यार even the thing is, हाँ हाँ continue बोलो. continue. नहीं 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 आप बस कंटिन्यू करो. मैं ये बोल रहा था कि थोड़ा डिफरेंट है यार, बिकॉज मैं ना कंफ्यूज भी हो जाता हूँ, इतनी बार इन्होंने छोड़ के वापस ज्वाइन किया है. तो Carlo left and it was Rafa Benitez who came, right? And then after Rafa Benitez had a very bad start. He was not working out at all. Zidane was managing Castilla at that point. And middle of the season, we fired Rafa Benitez and gotten Zidane. Okay. So I would say that the circumstances under which Zidane entered were much tougher compared to what Ancelotti entered. He did not get a preseason. Okay, he did not get a preseason. He did not have his own team, whereas Carlo could create some sort of his team, right? And that's why the first season was pretty successful, uska. But Zidane का थोड़ा और challenging था actually, right? Because middle of the season, पता भी नहीं है if you're gonna stay the manager after this year or not. A lot of uncertainty, and Rafa Benitez being shit. So I feel as if Zidane आया था तो that was a much tougher challenge than when Ancelotti came. एंड लेट्स बी प्रैक्टिकल, वो एक नया कोच था उस टाइम पे कंपेयर टू एंचेलोटी. एंचेलोटी के पास से एक्सपीरियंस था एंड ऑल दैट. लाइक जिडान की सिचुएशन वाज हाँ मच मच टफर. राइट, से Zidane did a internship under Carlo, put it या itself. दैट ही हाँ वो डिड. तो thankfully paid internship थी. Yeah. But ये प्रणय यार, तुम्हारा क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ अभी आंसर करें लास्ट में करें, बिकॉज हमारा सेकंड हाफ ऑफ द सेगमेंट वुड बी ranking Ancelotti and Zidane on various dimensions. But I can go around.
इसको लास्ट में लेते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन वापस पूछना प्रणय आफ्टर लाइक क्लोज टू द एंड ऑफ द स्ट्रीम एंड वील आंसर दिस एंड लेट्स सी व्हाट एवरीवन थिंक्स अबाउट इट, ठीक है? और क्या है? We can abhi start with the trophies and all, I guess, like कितनी trophies किसने जीती. And अभी जनवरी में ही recently एंचेलोटी ने equal किया जिडेन का वो trophies, number of trophies. Let me check. I guess it was 122. Yeah. And Yeah. number of wins also. Just Hmm. अभी just cross किया है कार्लो ने उस लास्ट सीजन. जनवरी के अराउंड ही किया है, हाँ. 263 games and 11 trophies equal, which is good. मतलब the thing is कि जिडेन एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड टाइम में आया था मैड्रिड के, जब मैड्रिड वाज सफरिंग. कार्लो ने लीव किया एंड देन एक और कोच आया, आई डोंट नो हिज नेम, अभी भैया ने मेंशन किया था, Rafa सॉरी. Benitez, हाँ. the Spanish एंड देन he waiter. performed really bad. एंड देन उसके बाद जिडेन केम एंड देन जब मिड सीजन में लग रहा था कि हाँ मैड्रिड का कुछ नहीं होने वाला, एट बेस्ट ये लोग सेमीज तक जाएंगे या क्वार्टर्स तक जाएंगे, वहां से उसने हमें अपना फर्स्ट पीट लेके आया. देन 2 साल उसने कंटिन्यू की वो ग्लोरी, 3 साल टू बी प्रिसाइज, अंटिल रोनाल्डो भैया लेफ्ट. एग्जैक्टली. सो ये समझना एक्चुअली काफी अच्छी बात छेड़ी है बिकॉज Zidane was the one who got Pintus, or the Real Madrid legend, into the frame. He was the one who initially got Pintus into the picture. I don't remember if he got him during the first season itself or या फिर वो summer pre-season में लाया था next season के. I'm not 100% sure, but he's the one. And in fact, उसके बाद से Ancelotti also kept Pintus, and he's the one who's been working on the physicality aspect of our players. And I feel as if a lot of success just goes down to Pintus as well. So डेफिनेटली. ये बात काफी अच्छी की है. वैसे एक सीजन एक और कंपैरिजन कर सकते हैं, आई मीन फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि 2000 कार्लो का सेकंड सीजन 14-15 वर्सेस जब जिडान वापस आ गया था 2021 द कोविड सीजन. सो दोनों की लाइक द क्लब वाज नॉट, आई वुड से, साइनिंग्स थी कार्लो के टाइम पे, बट जो इम्पोर्टेंट साइनिंग्स थी वो नहीं. कार्लो डिडंट हैव एनी से इन द ट्रांसफर्स, नॉट डिड जिडान. Right, that's one thing. And other thing is कि दोनों के वो seasons were very badly fucked up with injuries. But still, both lost the league by 1 or 2 points. Carlo lost by 2 points. Zidane lost by 1 point, and both of them lost in the semi-finals. Zidane to Chelsea and Carlo to Juventus, which was a very painful defeat. But हाँ, एक comparison है कि दोनों को पेरेज ने बैक नहीं किया इन टर्म्स ऑफ द साइनिंग्स दे वांट, प्लस दोनों की जैसे इंजरीज रिकॉर्ड रहे, एंड कार्लो का इस सीजन भी ऑब्वियसली, बट स्टिल दे केप्ट ऑन गोइंग एंड जस्ट इफ्स एंड बट्स की वजह से मेजर ट्रॉफीज रह गई. Yeah, the main thing is कि both coaches have been perfect for Real Madrid because dono, and I was going to come talk about it later, but dono, if you look at other coaches who are pretty successful as well, they have this habit of complaining in the media about, signings nahi hai, mere paas ye nahi hai. Even Mourinho was like that. Mourinho, Klopp, maybe even Pep Guardiola to an extent. अभी जावी को देख लो, मतलब कुछ ना कुछ excuse होता ही है, right? Ancelotti and Zidane, unless and until it's a very very big issue with, I don't know, the referees or something, they usually do not have an excuse for anything going wrong. They will blame themselves, they will take the blame, they will say that we have to improve, but वो कभी किसी और चीज पे blame नहीं डालते थे. And that's why I think that they're the perfect coaches for Real Madrid. I In fact, mean, हाँ बोल. हाँ हाँ, मेरे हिसाब से ये लगता है कि द बेस्ट थिंग अबाउट देम इज कि बोर्ड्स को भी एक ऐसे कोच चाहिए जो कि थोड़ा सा समझे कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद द फाइनेंशियल्स ऑफ द क्लब एंड ऑल दैट.
जावी अभी भी कंप्लेन कर ही रहा था until he started winning again. Like उसने जब अपना बोला था कि मैं सीजन के एंड में जा रहा हूँ, उससे पहले ही was complaining. उसके बाद ही was winning, but उससे पहले ही was complaining. तो लाइक ये चीज हमें देखनी होगी. बोर्ड को भी वही कोचेस पसंद आते हैं जो थोड़ा कम रोते हैं. लेट्स बी प्रैक्टिकल. यार ये स्पेशली चीज है रियल इनके मैड्रिड अंदर. बोर्ड पे, आई मीन सिर्फ रियल कहीं मैड्रिड और चल जाता है ये। ठीक है, रियल मैड्रिड में ये नहीं चलता। इनफैक्ट आई फील बैड बिकॉज जिडान वाज द वन who is indirectly targeted by the board a lot. I feel as if some people in the board kept rumor mongering कि Zidane would be fired if he loses, if that happens or this happens. So Zidane का हर press conference used to be, especially in his second stint, her press conference used to be, "Oh, are you going to be fired? Are you going to leave at the end of the season?" All his press conference in the second stint was this. Whereas Ancelotti, to an extent, did not face that. So I feel bad for Zidane, especially in the second term. I partly understand why it happened because Zidane in the second stint usually won matches, uh, on defense. based on defensive stability. ठीक है, तो हम बात करेंगे इस पे, बट उसकी मोस्टली डिफेंसिव स्टेबिलिटी थी। और हम कोविड के वक्त लीग इसलिए जीते हैं क्योंकि सर्जियो रामोस लास्ट में जाके पेनल्टी या कुछ मार देता था, एंड वी यूज्ड टू विन 1-0, which is hard for some people at Real Madrid to digest. I don't know if Perez also had a hand in it. I don't 100% think, but definitely some people in the board kept instigating the journalist that Zidane uh, Zidane kept instigating them to ask questions such that Zidane got really frustrated. I feel as if अगर वो frustrate नहीं हुआ था, he might have stayed another year as well, or maybe even longer. तो वो aspect था which I feel there was slightly different between Carlo and Zidane. Zidane. But still things turned out pretty well. समर्थ का मतलब कोई सेम पॉइंट है कि बोर्ड, रियल मैड्रिड का बोर्ड, लाइक देयर आर पीपल हु आर लाइक कोचेस एंड बोर्ड, दे गो अपॉन ईच अदर कि हमको ये प्लेयर चाहिए, कोच सेज कि मेरे को ये प्लेयर चाहिए टू प्ले दिस फॉर्मेशन और प्ले दिस स्टाइल ऑफ फुटबॉल. जिडान और कार्लो बोथ वर सिमिलर इन दिस पॉइंट कि उनको बस टीम चाहिए. दे विल मैनेज देयर स्ट्रक्चर, दे विल मैनेज देयर 11 बेस्ड ऑन दैट टीम, क्योंकि वो एक फ्रीडम थी ही नहीं. जिडान was crying about Pogba for what 3-4 years. First stint में भी he wanted Pogba, second stint में भी he wanted Pogba, didn't got him. और वो Pogba के अराउंड अपनी टीम बिल्ड करता. Similarly for Carlo, obviously Carlo को ये डिफेंस, ये अटैक नहीं चाहिए, but they just kept on going कि जो हमारे पास है, like they don't have a fixed formation. Like obviously Zidane, how he was in 2016 to 18 to how he was in 2020s. It's a good thing. Yeah, I agree. I mean, I think Akash here is saying the same thing. Hello, Amar bhai. Thanks for joining. We're good. Keep your comments flowing in chat, and of course, like and share and keep interacting, because obviously हमें भी interact करने में मजा आता है, and we can pick up points which everyone wants to discuss. Yeah, ये जो अच्छा, समर्थ बोल रहा है is exactly what I was trying to say, that कि Zizou in the end left because he was frustrated. भैया, I had a question. आपके हिसाब से technically who was better, Ancelotti or Zizou? Okay. पहले शांत में हाँ. Again, इस पे अब I think before we do this, let's do that ranking सब चीज के लिए. Like, let's start that segment right now unless someone else wants to discuss anything. I think we've more or less discussed everything. So chat, what we are going to do is that we are going to... A question I'm forgetting. A question को लेना है ये आकाश का. Zidane got most of the players he wanted in the second stint. Sorry, मैं भूल गया. इसके बात हो रही है. Second stint में we had no signings, right? Almost. 2020 में तो नहीं था कोई भी. अच्छा, okay, he's talking about Hazard. Okay. Hazard. Okay. Yeah, that's a big bummer. Okay. Militao और Jovic तो already signed थे before Zidane came in. So Hazard is one, I think. Right, Akash?
Hazard के अलावा I think Zidane was crying about signings, but he never got the signings he wanted. Monty हो गया, but Monty successful भी था यार आकाश. ठीक है, it's not like Zidane गया और हो गया, but still आकाश एक Hazard और एक Monty in total of 4.5 years. That's too less. 4.5 No, years I पे आप think Hazard दे रहे हो. I think the whole point is that it wasn't enough to overcome the fact that Ronaldo was not there anymore, right? True. So He and by wanted that proper. point, Bale was non-existent as well. At least as far as I remember, Bale did a bit after Ronaldo left as well. But by the time Zidane started his second stint, he was completely uh, Lost. lost, right? And Hazard ka to chalo, let's not even think about what's happening. So, and that's when Zidane started playing the likes of Vinicius and Valverde regularly, and that's how they came out, right? एंड आई थिंक कि विनी कार्लो के अंडर ज्यादा थ्राइव किया है देन जिडान, लाइक कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा. Of course, I think if we think about development, Vinicius developed a lot under Carlo. If you think about giving him a chance and playing him in the first team, it was Zidane. So again, we'll come to all of this when we talk about. Uh, डेवलपमेंट ऑफ यंग प्लेयर्स. uh, या अरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे तो मुझे समर्थ की एक से अभी एक याद आया. देयर वाज अ सीन जब जिडान अपना इंटर्नशिप कर रहा था अंडर कार्लो. So Zidane used to, obviously Carlo manager है तो Carlo would be answering the press. So Zidane used to come and sit along with the press, take notes कि Carlo कैसे answer कर रहा है. Like Carlo used to make fun. Like Carlo is a very क्या जॉली टाइप. jolly type person. Yeah, ह्यूमरस. would answer everything with a fun way, jokes saying. So same thing Carlo, same thing Zidane also followed. Zidane notes लेता था press conference के. मतलब सोच सकते हैं press conference के notes ले रहा है वो बंदा बैठ के Zidane. And still he went with this. Yeah, these issues. No, I He agree. knew I mean, what he he was had to very do. thorough. Zidane was Definitely. very thorough. I'll just take a few more of these questions. तब तक तुषार किसी तरह let's display what we want to. If you can display something where we show कि हम किस category की बात कर रहे हैं and who are we giving our vote to, just see if we can pull something like that up. नहीं होता तो ठीक है. But Mubashir bhai, actually Zidane didn't have a problem with Isco and Odegaard. It was Isco had a problem with the guy before him. क्या नाम था उसका? Lopetegui. No. Lopetegui also liked Solari, Isco. Solari, Solari, Solari. Solari. So Isco had a problem with Solari. In fact, when Zidane came back, he changed the formation specifically to fit Isco. ठीक है. And इसको वो फॉर्मेशन उसने 5 midfielders की बना ली, but and इसको started playing really well. The issue what happened was कि COVID हो गया and इसको again gained weight and he was out of touch again, right? So that was the issue. But if you think about before COVID, in Zidane's season, Isco scored against PSG, Isco scored against Man City, Isco scored against Valencia in the Super Cup. So Isco was playing really well under Zidane. I think Zidane loved Isco because he was the closest player to him in terms of ability in that Real Madrid Isco squad. was, in my बहुत opinion, effective था in overall. 2017 final year versus Juventus. Huh? Isco, in my opinion, was man of the match in 2017 final versus Juventus. हाँ मतलब Isco has been crazy under Zidane. I mean, there's no comparison. I think Isco under Zidane is one of the most lethal combinations along with Ronaldo and Bale, because he had the ability to carry the ball forward and pick out passes. And the other aspect was कि जब main players नहीं खेल रहे हैं तो Isco stepped up and scored goals as well. So Even I have a
अंटिल Yeah, 16-17 बेल जो था मेन टीम में 17-18 में इंजरी क्राइसिस के बाद उस जिडान का तो उससे भरोसा उठ गया, तो इसको स्टेप्ड अप ओनली एंड लाइक वही था एक रेगुलर स्टार्टर एज अ नंबर exactly. 10. तो या ही हैज बीन रियली Yeah, ग्रेट. yeah. Tushar, you wanted to. यार मेरे को नोटपैड के अलावा कुछ और समझ नहीं आ रहा फिलहाल. हाउ डू वी राइट समथिंग और कंपेयर के लिए? Uh, कुछ भी share कर दे so that at least we know what we're talking about. Okay, ठीक है let me चलो. just try to I do I something. agree with and Odegaard का sorry just to complete my thought Odegaard का issue हुआ था that Odegaard didn't want to be patient enough. तो अगर I mean अगर उसको playing time चाहिए था and Modric and Kroos were not willing to I mean Modric and Kroos were still at their top. It was just bad timing in my opinion. I understand why he wanted to leave, but at the same time if he was patient like Valverde, Camavinga have been, I think he could have been, taking Cruz Modric's position as well right now. But he didn't want to, and it just didn't work out. I don't think it was an issue, but I guess that's how it is, right? So I don't have a big issue with that. तब तक Yeah, आप एक वो exactly. उसका कर लो कि आप जिडान और ओडेगार्ड का कर लिया. सॉरी, कार्लो, कार्लो और बेल का भी बीफ था. Like people know about Zidane and Bale issues. So क्या हुआ था? Like 2014 season, Bale का second season. Bale को was Bale was a left winger at Spurs, or obviously Ronaldo had Madrid, the left winger, and Bale wanted to be played on his favorite side, which is left wing, and Ronaldo to be shifted on the right wing. This is what Bale wanted. और जो बेल का मैनेजर था, सॉरी नॉट मैनेजर, एजेंट था, फॉरगेटिंग हिज नेम, साथ में नाम याद है उसका? Chris Barnett or something. बार्नेट, जॉन बार्नेट. John जॉन Barnett. बार्नेट, राइट. So what John Barnett did is John Barnett ने comments करे थे, which he did against Zidane also, but he did it against Carlo also, and he went against Carlo to uh, Paris. So ये सब भी हुआ था with Bale. People only remember about Zidane and Carlo issues. Mm-hmm. So Carlo also had this with Bale. Bale wanted to play left wing, but obviously no. अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड हम वैसे अब ये कर सकते हैं लाइक इन लोग के एनालिसिस लाइक पर्सन टू पर्सन जिडेन को कौन सी फॉर्मेशंस पसंद थी, उसकी टैक्टिक्स हाँ, क्या मैं थी, मैं कर लाइक रहा ऑल हूँ यार, दैट. मैंने एक एक्सेल शीट बना रही है. अच्छा, ओके. So, chat, what we'll do right now is uh, we will pick up 4, 7, 8 criterias and try to rank Carlo and Zidane and figure out what we think who was better. And we also want you guys to vote. So we'll take your vote into consideration and then let's see who comes out to be better. Right. So that's what we're gonna Let's do. So Tushar. let's do a look, चलो ठीक है, चलो. I'm sharing. वैसे हमें इस चीज़ को भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए कि जिडेन कंपैरेटिवली बहुत यंग था व्हेन ही केम टू मैड्रिड एज अ कोच, एंड देन एंचेलोटी, लाइक एक्सपीरियंस की बात करें तो लाइक Yeah, दिख रहा है स्क्रीन? यस. साथ में हम भी आ रहे हैं, right? या So we Yeah. have this matrix: office, tactics, man management, your players development. What else? Style of play. Right. Right. So इधर से start करते हैं फिलहाल. Right. So start करते हैं शायद. Available? Let's go. So, whenever something comes up, chat, if you think there's another metric we should add,
happy to do that, and we can keep discussing, right? So let's Yeah, make this interactive. So trophies पे आते it's हैं. good. Uh, Sorry. Zidane with Madrid has got like 11 trophies, if I'm not wrong, and Carlo bhi same number, same amount of trophies. But अगर कार्लो का अगर हम ओवरऑल करियर देखें तो he's got like 25 trophies or something. तो अभी हम मैड्रिड का ही करते हैं तो 11-11 So दोनों on. का सेम है. So who is voting? uh, so on trophies, I'd just like to say this. I I am. This is my personal opinion. I know people don't agree with this. I am always have been a fan of consistency. Mm-hmm. So, in my opinion, winning Champions League is good, but at the same time, you should be winning in the league as well, which Real Madrid hasn't been Definitely. doing well in the last 10-15 years, and something that Ancelotti is not known for as well. So, if we look at the important trophies, uh, I th- I think Zidane has. Let's pull out the number of La Ligas and Champions League. Zidane की Can La Liga तो it's only two, which is also Carlo. and Champions League we ट्रॉफीज have में दे आर Zidane. सिमिलर मोर और लेस. हाँ. चैंपियंस लीग मतलब में तो जिडान हैज एन अपर हैंड. But so I am 50-50 in trophies then for both. Last वाला डालने की जरूरत नहीं है. We'll just give you know the final score to them. We don't need to give our individual scores. sure. श्योर. I So I would हाँ बोलो तुषार भाई. क्या आपने क्या बोला 50-50? हाँ मेरे लिए 50-50 है. There hasn't been a lot of differences. I liked a few seasons more than of Zidane than Ancelotti. Like the one where we did the league and Champions League double. Champions League double. That was my favorite season. But if we look at importance, I think the La Decima and maybe the Champions League run last to last season has been the most impressive one. So mainly more or less for 50-50. So I think I'll do that. I'll agree with Raj, him here. I'll agree with him here. Yeah. same. I don't think we separate कर सकता है. दोनों की सही अपनी बात है. अपनी. But I would say जो people will like Chatman talked about Champions League. मेरे लिए the most memorable one is the Zidane's league, the league of 2021 and the league of 2017. Because जब मैंने रियल मैड्रिड को properly follow करना शुरू करा था, like Mm-hmm. Zidane used to say कि champion winning league is more tougher and important than winning the Champions League. तो मतलब एज अ एशियन फैन जो हर मैच 38 गेम्स देख रहा है रात को 8 बजे, तो being consistent over that is what I prefer. So I would go with Zidane that way. Just slightly, like 51-49% with Zidane. Maybe I would agree with that. So yeah, what do you think, Raj? वेल 51-49 कर सकता है क्योंकि कंसिस्टेंसी डज मैटर एंड कार्लो इस टर्म्स में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिंग है एज कम्पेयर टू जिडान. तो लाइक ओके वी कैन गो विद दिस लाइक 51-49 वाला मेक सेंस. अगले Yeah, I think Carlo has won the league only once. twice No, twice twice, twice. इस सीजन का हो गया ना, मान लो. That's I what mean, this. I wouldn't say that. So he's won it once. I think importance, to be honest, now I somehow thought he won it twice as well. If we look at importance, I think how many? So Zidane has won how many La Ligas? Two La Ligas, right? Two La टू ला Ligas. लिगास. Both Yeah. were And super important. How many Champions Leagues? Three. 3. So so five important trophies. And what about Ancelotti? He's won 4 two Champions League. Two La Ligas. and That's 2 the ला latest. लिगास. But the point is, Zidane never won the Copa del Rey, but Carlo won it Zidane twice. never won the Copa del Rey. Carlo won it That's true. twice. एंड कार्लो का
जो भी एक्सपीरियंस है एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ वो भी थोड़ा बुरा ही रहा है एज कम्पेयर टू जिडान. I mean, but that's not trophies, but he's won against them Yeah, in the La La Decima Decima. and stuff. La So Decima. I think I'll give the edge slightly Do To Zidane. to Zidane. I'm just thinking if am I missing anything? And let's look at what chat says, and then let's give. Uh, The vote. एल क्लासिकोस देख लो गाइस इसका रिकॉर्ड भी इम्पोर्टेंट है. हाँ देवऋषि भाई हाँ सही एल बोल रहे हैं क्लासिकोस. क्लासिकोस भी इम्पोर्टेंट है. Actually, El Clasicos could be another category. Yep. कमेंट्स देख रहे हो कोई कमेंट्स डाल दो. होगा तो टैक्टिक्स में मूव करते हैं. Yeah, sure. Yeah. जिडान का बेसिकली फर्स्ट इन का शायद ना कमेंट्स ले लिए फॉर ट्रॉफीज वाले. Comments में, I think Dave said Zizou, Pranay said Carlo, uh, Barabari almost. It's nothing much to choose. दोनों लेजेंड है भाई क्लब के एज कोच. So एक I तो think हिस्ट्री. I will just put pick Zidane just because he's won the more important trophies. I think. Uh, We can go with that. True. Slightly Zidane. yeah, slight edge to Zidane. Tactics में यार इसको थोड़ा expand कर देते हैं. Let's not say just tactics. Tactics. डिफेंसिव So ऑफेंसिव पूरा. defense, offense, दो और categories बना दे. Let's keep tactics, but let's keep defense and offense as well. चलाते हैं. और एल क्लासिको का एक अलग मेट्रिक बना दो. बिग गेम्स डाल दो. चैंपियंस लीग भी आ जाएगा. हाँ, तो बिग गेम बना दो. 20%. ठीक है, just वो 11-1 उसकी जगह just give like 1 point or 10 points for Zidane and 0 for Carlo. We'll just add the points. 0 or 9. Let's give it और 9. हाँ ठीक है, 9 डाल दो. So tactically, personally, I think Ancelotti has done more in his second stint than I thought he did in the first stint. But I cannot overlook the fact that Ancelotti has brain fart moments in big games. And I prefer Zidane personally. But just tactically preparing for games, I think Zidane does a better job than Ancelotti, but that's my opinion. I think कोई भी बड़ी गेम देख लो, हाँ, it has happened that sometimes Zidane has obviously failed as well, but I don't know. Carlo Afraid somehow, of Chelsea. either it's an implementation problem or something. That there have been too many games where I remember Ancelotti just not getting the team right or not getting the tactics right, and he's been outplayed by other managers a lot. So Opponents. that's my concern. He doesn't have a good record against Simeone. He doesn't have a good record against some other big But Xavi. managers. So Javi को तो छोड़ दो भाई. Javi is not a big manager. But still Xavi से भी अच्छा रिकॉर्डिंग है ना. That's the हाँ वो. But anyway, so for me it's Zidane. What do you guys think? doubt. आई थिंक अगेन जिडान और कार्लो में एक बहुत की डिफरेंस ये है कि जिडान इम्प्रोवाइजेशन बहुत अच्छा करता है, मतलब अडेप्टेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जहाँ पे कार्लो थोड़ा सा लैक करते हैं कंपैरेटिवली. सो लाइक या आई विल गो विद जिडान एज वेल.
मैंने कार्लो को 8.5 सॉरी मैंने जिडान को 8.5 दिया बिकॉज टॉप ऑफ द हेड काफ़ी मेमोरीज याद आ रही है. वन इज द पीएसडी गेम जिसमें हम 3-0 हारे थे, द ग्रुप गेम यूसीएल. देन आई एम रिमेम्बरिंग द चेल्सी गेम जिसमें उसने विनीसियस को राइट विंग बैक खिलाया था. सो दैट वाज अ utter disaster. So I mean, I think Zidane has had those moments as well, but uh, but if, comparatively if yes, if both are given the same team, I think Zidane would do yes, tactically better yes, than yes, Carlo. yes. That's my concern because The Zidane had to do all those things when he did not have a very set team that he was playing with. true, On the, so if given the same teams, I would think Zidane might do tactically better. He prepares for games better than Carlo does, in my opinion. Yep, जनता agree. क्या What does बोलती है? I think everyone agrees with that. सब जीजू भैया के साथ ही हैं. Yeah. किसी को लगता नहीं रहा कि राइट विंग बैक खिलाना is was good choice. So even City के against Uh, the City second leg where Hazard was played over Vinicius, COVID season at the Etihad. हाँ यार बट अगर वरान या वही मैं बोल रहा था अगर वो वरान ने हगा नहीं होता वी हैड अ प्रीटी गुड चांस टू विन दैट गेम सो Yeah, those games I can't even say that कि वो जिदान की गलती है because I mean both the goals were just defensive mistakes so you can't tell players how to play in the end right खेलना तो जाके players को ही है Definitely. ठीक है. इस पे आते हैं फिर मैन मैनेजमेंट. क्या कह रहे हो राज? आपसे स्टार्ट करते हैं मैन मैनेजमेंट पे. मैन मैनेजमेंट में आई थिंक कार्लो मैनेजेस प्लेयर क्वाइट वेल. मतलब वो पर्सनली काफ़ी अच्छा काम करता है. एंड जिडेन को मैंने इतना देखा नहीं है क्योंकि मोस्टली उसके जो भी प्लेयर्स आए जैसे थ्री पीट वाले टाइम में भी उसके टीम में जो 6 प्लेयर्स थे वो ला डेसिमा के प्रेफर्ड 11 में से थे. तो उसको इतना टाइम नहीं मिला किसी पे पर्सनली काम करने के लिए. तो आई थिंक आई चूज राज कार्लो ओवर जिडेन. जस्ट टू इंटरप्ट यू, प्लेयर्स डेवलपमेंट और मैन मैनेजमेंट अलग बात है. लाइक मैन ओके, मैनेजमेंट इज एक हाँ मिनट, बेसिकली सॉरी, मैं प्लेयर्स डेवलपमेंट की बात कर रहा था. सॉरी, माय बैड. हाँ, मैन मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट बेसिकली में आप. हाँ आप अपने ड्रेसिंग रूम को कैसे मैनेज कर रहे हो. लाइक जिडान हैड दैट ऑरा. जिडान जब आया था बेसिकली कार्लो वाज सैक्ड एंड नोबडी वांटेड कार्लो टू बी सैक्ड इन दैट ड्रेसिंग रूम. रामोस डिडंट वांट टू, रोनाल्डो डिडंट वांट टू. और दो काफी हेवी वेट्स है राइट. देन बेनिटेज आया और बेनिटेज की दोनों से नहीं बनी. एंड जब जिडान आया एवरीबॉडी हैड दैट रिस्पेक्ट फॉर जिडान कि अगर जिडान कुछ बोल रहा है. लाइक बेनिटेज कुछ बोलता था मॉड्रिच को ये नहीं करना, रोनाल्डो कहता फ्री किक से लेनी, तो नोबडी यूज्ड टू केयर. अगर जिडान रोनाल्डो को वैसे नहीं बोलेगा, बट इफ जिडान यूज्ड टू कम एंड से रोनाल्डो यू वोंट टेक द फ्री किक्स फ्रॉम नाउ ऑन, तब रोनाल्डो विल बी एंग्री बट ही वोंट क्वेश्चन जिडान. ही विल तो रिस्पेक्ट द रिस्पेक्ट होती है, डिसीजन. म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है राइट. ओके. देयर इज दैट वीडियो हाँ, जब जिडान आया था पहली बार, देखा है आपने शांति में 2016 कौन when सा he's meeting the dressing room. Zidane when he's meeting the dressing room for the first time. मे बी देखी होगी बट आई डोंट रिमेम्बर That's man. but I think the thing is both are really good man managers because they have, as far as I remember, under these two there haven't been any big dressing room issues. Right, under Jose Mourinho तो हर हफ्ते कुछ आ जाता था कि कैसियस ने ये कर दिया उसने ये कर दिया रोनाल्डो गुस्सा हो गया. I think in दोनों के under I can't remember that someone was actually pissed off at either of the two managers apart from Bale who's had his issues but mostly with the journalists. I don't think he had an issue as much with the coaches that much. yeah. So I would say, but saying that, I think Ancelotti is one of the best. I think if not the best, he's the best man, one of the best managers that we've ever seen historically. ठीक है, तो Carlo has to be the pick for man management because there have been cases where even the players who don't play under Carlo love him. ठीक है, वो जिडान के अंडर नहीं था. Odegaard had an issue. Isco, no, I won't say Isco, but a lot of players who were not playing under Zidane
Llorente. they had an issue with Zidane and they wanted to leave. Whereas for Carlo, even the players who were not playing regularly, they kind of want to stay. And वही देख रहे हो भाई, पावर ऑफ फ्रेंडशिप की वजह से हम जीतते हैं मोस्टली एंचेलोटी के अंडर, तो स्पेशली लास्ट सीजन, राइट? सो I think Carlo would go, but we should not forget that Zidane has that presence and aura where uh, players have to listen to him. So he has Even that different Zidane as style. a even Zidane as a player had that aura. Like उस वक्त के उसके जो teammates थे, they used to commend him for that. So we should not neglect that. We can do a 9-10 here, Zidane or Carlo में, or 8-10. मैं एक बार हाँ, से I'd say I'll give 8-10 because there have been, अभी किसी ने बोला he managed Hazard situation, managed Ronaldo, Ramos, whatever. Yeah. I would just say 8-10 is fair. Player development is actually tricky, but let's talk about it. What do you think, Tushar? आई थिंक इसमें तो कोई क्वेश्चन है नहीं पर्सनली, because the number of players that Zidane had, like he integrated them into the team versus the players Carlo has integrated into the team. वैसे Carlo का his career has been very long. अगर आप सिर्फ रियल मैड्रिड पे देखो तो still he had players, uh, he had his what you say moments, like आप अगर कार्वाहाल को ही ले लो, ठीक है, कार्वाहाल came from a लेवरक्यूसन लोन और उसका फर्स्ट सीजन वाज अंडर कार्लो व्हिच वाज द ला डेसिमा, बट आप कह सकते हो ही वाज फ्रॉम लेवरक्यूसन, वहाँ पे अच्छा खेल के आया, बट स्टिल ही वाज यंग। और बुंडेसलीगा के कितने प्लेयर्स अच्छा खेल के आते हैं बट दे डोंट डू गुड एट द बिगर क्लब्स। सो एक ये हो गया आपका कार्वाहाल, टॉप ऑफ माय हेड, विनीसियस रोड्रिगो तो ऑब्वियस है, बट व्हेन इट कम्स टू जिडान मैं कोई सोच नहीं पा रहा। बस एक इसको है जो लाइक दिखता है इसको, एंड फ्रैंकली थोड़ा बहुत क्या नाम है अपना, लूकास वास्केस। असेंसियो भी कह Yeah, सकते हैं आप, हाँ। Zidane, I think player development se zyada, if you also talk about not just development, if you also talk about giving the people a chance, I think Confidence, Zidane has the edge. Zidane edge. introduced Zidane introduced a lot of young players which you are forgetting. Zidane introduced Vinicius, Zidane introduced Valverde, he trusted Valverde. Zidane gave chances to a lot of youngsters. Ancelotti has also done that. Ancelotti ने पहले स्टिंट में हेसे को चांस दिया था, Yes, ठीक है, एंड मोराटा टू एन एक्सटेंट उसने थोड़ा खिलाया था, एंड ऑब्वियसली कार्वाहाल एंड ऑल दीज अदर प्लेयर्स. Yeah, I mean, I know Solari introduced Vinny and Valverde, but Zidane started playing them regularly. मतलब द Zidane थिंग ने इज कि कार्लो थोड़ा सा रिजिड रहता है कंपैरेटिव टू जिडेन व्हेन इट कम्स टू गिविंग द चांसेस, अनटिल अनलेस बहुत लाइक इमरजेंसी ना आए, ही वोंट गिव द चांसेस। तो जिडेन हाँ, उसमें थोड़ा सा ज्यादा वो है but just to परफॉर्मेंस। complete my thought, जो player development की बात करें तो I think Carlo has the edge because we haven't, as Tushar already said, there haven't been a player which we can say that Zidane took from an immature star to an established स्टार, superstar. या There can be some names, but most of them were already established. Varane tha, but he was also established. Casemiro, all those players had सही बात है। already were close to their peak, and Zidane just got everyone together. So I think player development for me would go to Zidane. हाँ, और इस चीज में मैं Sorry, थोड़ा my सा God. ऐसे Player development will go to Carlo, कार्लो। and Zidane, if player introduction and stuff, maybe Zidane had the tendency at least to give more chances to people on the bench. So इस चीज में थोड़ा सा मैं भी ये ऐड करूंगा कि जब 15-16 वाला फर्स्ट ईयर था उसके लिए, जिडेन के लिए, तो उसने कैसेमीरो को स्टार्ट करवाया था ओवर जाबी, हु वाज मोर एस्टैब्लिश्ड एज कंपेयर टू कैसेमीरो, एंड
कैसेमीरो को टारगेट भी किया जा रहा था, उसको प्रेस भी किया जा रहा था काफी ज्यादा एट दैट टाइम, बट रादर देन बेंचिंग हिम उसने अपने टैक्टिक्स बदले, विच आई रियली अप्रिशिएट अ लॉट अबाउट जिडेन एंड रिस्पेक्ट अ लॉट अबाउट जिडेन। उसने कैसेमीरो के हिसाब से टीम को चेंज किया रादर देन जस्ट इंट्रोड्यूसिंग जाबी अलोंसो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो लाइक बट स्टिल जाबी अलोंसो कार्लो तो इज तब तक चला ही गया है। But anyway, I think overall I would give Carlo probably like a 9 and Zidane maybe a 7.5 or an 8. agreeing with you here. तुषार तुम म्यूट पे हो। हाँ, मैं यही कह रहा था कि आई एग्री विद 7.5 नॉट 8 फॉर Zidane. Carlo 9 is decent. मतलब स्टार्टर वाली बात होती है, आप वेलवर्डे को कह सकते हो, Zidane got him, कैसेमीरो, नहीं ना, मतलब there was no opportunity for Zidane से पहले they were already introduced. हाँ, but they were close to their peak. I can't remember कि अच्छा इसको Zidane ने develop किया है। Isco was Exactly. already established. He Right. just had to fit in the team. Yeah. One player I can remember is Asensio, जो Zidane के अंदर Hmm. एकदम आया from Mallorca, जिसको कोई नहीं जानता था. Even then, I would say कि Asensio was pretty close to his peak. Awesome. I think Hmm. Vinicius wasn't, Yeah. uh, Valverde wasn't, Mhm. Kamavinga, Chameni. Now, I think थोड़ा chance की बात भी है कि Zidane never had to do it. I would say he's still responsible for Vinicius's development, but just because the jump from Zidane to Carlo has been so huge for Vinicius that वो थोड़ा underplay हो जाता। अगर Zidane ने नहीं खिलाया होता Vinicius को, so Vinicius would not be playing for us right now. I want to सही Uh, बात disagree है। here. I want to disagree here. मुझे एक randomly बात याद आई. Uh, 2018 जो थर्ड CL था Zidane का. In that season, league में we were terrible. That's mhm. one thing, we were terrible. Then Carvajal was injured for most of the time. तो बताओ राइट बैक कौन खेलता था? नाचो. Lucas Vasquez. नहीं Vasquez भी नहीं, खेलता 20 था। 2018. हाँ, अच्छा, उसके चलो ओके। ठीक है, बाद ठीक है. बट उस सीजन हमारे पास पता है बेंच पे कौन था? हकीमी. बट Zidane never used to play Hakimi. Even वो लीग हम 15 पॉइंट से लीग हारे थे, वो लीग हम थर्ड आए थे. So, पूरा इंसेंटिव था टू प्ले हकीमी, बेंच नाचो, बिकॉज कोई सीजन नहीं था टू प्ले नाचो. तो वो हकीमी को खिला सकते थे उन गेम्स में, हकीमी, थियो, बिकॉज दैट लीग वाज डेड. There are other players as well that थियो left हर्नांडेज. because Theo Hernandez, Miguel Gutierrez. I mean, Miguel Gutierrez is one player which I right. Maybe Sergio Reguilon, which you could say that Zidane kind of developed, but they never have come up for Real Madrid, so it doesn't really matter. As Akash said, introduction doesn't matter. It's mostly for selling them. So let's see. The only thing I want from Carlo is if he gives a bit more chance, like he did to Hesse and other players, to youngsters in the team, because I think there can be some players like Nico Paz and some others who can come up well, and if not, start for Real Madrid, बेच ही दो उसको. Even Tobias is going, Vinicius Tobias. I think उसने impress नहीं किया, so there's no point उसको लोन से playing भी him. भेजते. भाई फुटबॉल न्यूज़, I mean, देखा तो था, कोई कोई फायदा नहीं है बात करने का, देखने मतलब लायक नहीं था, हाँ। क्या कमेंट है? अच्छा, इंडिया का मैच. हाँ, Yep. इसको छोड़ ही दे तो बेटर है. चलो, let's move on to style of play. आई एम गिविंग 1000 टू कार्लो. मैं स्टार्ट करता हूँ बिकॉज मैंने रियल मैड्रिड के देख लिया है बहुत, इतने मैच जितने मैंने लिखे हैं. द मोस्ट मेमोरेबल फन सीजन आई एवर हैड इज 2014-15. हम उसमें कोई ट्रॉफी नहीं जीते, बट जो गेम देखी थी मैंने उस सीजन में, दैट वाज द बेस्ट मोस्ट एंजॉयबल गेम आई एवर सॉ ऑफ रियल मैड्रिड एवर सीजन. कि जो अटैकिंग प्ले था, 14-15. The one जिसमें after La Decima. La Decima, exactly. So हर गेम 2017 और 2022 people might argue, but वो ना फिर more about है.
बट 2014-15 वाज मैच शुरू हुआ है, 30 मिनट हुए हैं, वी आर ऑलरेडी 3-0 अप. क्वेश्चन वाज नॉट कि अबाउट हम जीत रहे हैं नहीं जीत रहे हैं, क्वेश्चन वाज अबाउट हम कितने गोल से जीतने वाले हैं इस मैच में. क्वेश्चन वाज अबाउट रोनाल्डो इस मैच में गोल मारेगा नहीं मारेगा, ये क्वेश्चन है. रोनाल्डो इस मैच में हैट्रिक मारेगा नहीं मारेगा, दैट वाज द क्वेश्चन. और द लाइनअप कार्लो यूज्ड टू फील्ड वाज two up front, uh, basically Ronaldo and Benzema या Bale, और इसको और James on the flanks. James का first season, so that was my favorite season, favorite style of play, the 4-2-4. So अब आप बोल सकते हो. देखो आकाश लास्ट में है बिग गेम्स. द Style of लास्ट play लास्ट निकालो ब्रैकेट ऑडियंस को इज just. नहीं नहीं, आकाश इज सेइंग कि बिग गेम भी ऐड कर दो. नीचे सबसे लास्ट में अच्छा, वही है बिग गेम्स. okay. आई एग्री विद यू. The issue was, अगर Ancelotti would have used the bench a little more और क्रूसा मॉडरिच को पूरा डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया होता, that could have been a treble winning Our season for treble us. season, right, I right. think we won what 20, how many Nothing. games in a row? We won 40 games हाँ, in a row in the beginning, 40 games in a row. Yeah, not 40 or games in a row. We 40 were games unbeaten, undefeated, unbeaten, unbeaten for unbeaten. Or 40 that was a 40. world record at that time. Exactly. Or we drew the record against Bayern or something. So, हाँ, so bhai, that was, I agree, one of the, in fact, even the one before that, the La Decima season was one of the most artist entertaining seasons for us. football. Yes, Right. yes, So yes. obviously Real Madrid में attacking football matters. अगर थोड़ा better manage कर लिया होता Ancelotti ने in terms of squad management, then in fact we should add. I mean, I know I'm adding another category, but we should add squad management here because that's where Zidane has a big edge over Ancelotti. Right. So yeah, I think style of play, there's no doubt Carlo edges Zidane. I would give Carlo a 9.5 if not a 10. And Zidane ka the second stint was very very defensive, but at the same time, I mean, I don't know why people are complaining. We did not have the players who could score. I mean, Benzema wasn't playing as well as he did on Ancelotti. सही बात. I think league jeetne ke liye that was required. It was not our prettiest season, but I would still take the league win. So style of play, obviously, people don't like the second stint, but जब वो हम 3 चैंपियंस लीग लगातार जीते हैं during that period, he relied a lot on crosses, Salah. which, to be honest, that was brain hemorrhage. I think किसी ने डाला हुआ था. The number of crosses we used to put in, Zidane was not good at playing with teams who played with a low block. I think that was one of his biggest weaknesses as well. Ancelotti tries to get over that, and अब Bellingham type players हैं हमारे पास. जब इसको खेलता था तब ठीक था, but when Isco was not playing, we struggled a lot with these players. Asensio खेलता था तब भी थोड़ा ठीक हो जाता था, but we put too many 7. crosses in. So I think But 7 point. I noticed with Zidane कि इसको को उसने एज अ नंबर 10 जो रखा था वो यही करता था कि ही यूज्ड टू पुल अवे ऑल द डिफेंडर्स एंड उसके बाद 3 में अपना बीबीसी जाते थे एंड वो करके आते थे मोस्टली क्रॉसेस कंप्लीट करके आते थे हेडर स्किट्स और समथिंग लाइक दैट. तो ये चीज आई एग्री विद यू हियर. Yeah, उसने इसको भी पुल अवे करने के लिए ही यूज किया था मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिफेंडर्स को. वैसे मुझे इससे एक exactly. स्टैट याद आया शांतनु भाई. स्टाइल ऑफ प्ले में Zidane का Real Madrid is the only season ever in any footballing team कि each and every game was scored. मतलब जाने क्या बोलते हैं मैंने, बट हर गेम में हमने स्कोर किया था उस सीजन में 2016-17. We scored I minimum of 1 remember. goal in every game across all हाँ. competitions, और ऐसा कभी नहीं हुआ है अभी तक. We were बट just Zidane का much more well balanced, I think. और क्रॉसेस में यार अपने पास रोनाल्डो, बेंजेमा, मोराटा टाइप प्लेयर्स हैं, तो व्हाई नॉट यूज इट. और
हार रहे हैं तो ऑफ कोर्स रैमोस गोज अहेड क्रॉस मूव. If you have it, then why not use लव it? डेसिमा स्टाइल सही तभी बात है। तभी तो जिडान ने ये सेकंड स्टिंट में नहीं किया, बट सेकंड स्टिंट में भी कर ही सकता था क्रॉस एंड इंशाल्लाह, बट वो टीम थी नहीं. Yeah, एरियल I think एडवांटेज था issue तो था यूज किया. mostly with the low block teams because वो crosses कभी पहुंचते ही नहीं थे. That was the issue. But anyway, let's move on. We can give him an 8. I mean, obviously, there were Eight. those teams were one of the three-peat team was one of the best team in the world. So for a long Yes. time, Okay. so obviously, uh, yeah, defense offense को बाद में लेते हैं. Let's come to big games and squad management Squad first. management. स्क्वाड मैनेजमेंट जल्दी खत्म कर लेते हैं बिकॉज उसमें कोई डाउट नहीं है मेरे माइंड में. आई थिंक जिदान हैड वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड जिदान मैनेजमेंट्स. इनफैक्ट थोड़ा ओवर ही कर देता था, तो वो आई गिव हिम अ 9.5. एंड टू बी Wasn't ऑनेस्ट, हाँ, wasn't there a issue with Zidane कि Zidane काफी लेट सब्स्टिट्यूशंस करता था, या मुझे ऐसा लग रहा नहीं, कार्लो जिदान तो रेडी होता था 60-70th मिनट में सब्स्टिट्यूशंस करने के है. लिए. ओके ओके. अरे भाई, ओजी ओजी इज हियर. अरे ये कर रहा हियर फॉर अ व्हाइल ओनली बिकॉज़ अरे यार अच्छा भला पैनल चल रहा था हमारा, क्या घटिया लोग हैं. अरे यार देखो कुत्ते भी भौंकना शुरू हो गए आकाश के आते ही. ये आवाज कम कर लो यार, जहाँ से भी आ रही है, हाँ हाँ या मेरे से आ रही है. हाँ, बट ऑब्वियसली इस साल जो एंचेलोटी का यूजुअल स्क्वाड मैनेजमेंट इज प्रीटी पुअर, बट इस साल जो किया है, नो वन कैन डाउट दैट ही इज मेड something out of nothing, in my opinion. It's not as if we don't have the players actually, but changing formation and all of that, I think that has been good. But usually my biggest problem with Ancelotti has been his squad management, which sometimes I don't understand at all. Like कब rest करना है, कब नहीं rest करना है, कब किसको खिलाना है. I think Ancelotti को खुद ही नहीं समझ आता होगा कभी-कभी. I think Shantanu, instead of squad management, we can call it rotation, squad rotation. I think Squad that will be rotation sort of a management it's not हाँ player एक ही बात है management, मतलब it's squad management की किसको खिला रहे हो, किसको नहीं खिला रहे हो. exactly मतलब यार ये तो तूने बिल्कुल सही बोला है because साला remember that Almeria game we won in the end somehow but हाँ, why the fuck was Valverde playing? किसी को नहीं पता, एंचेलोटी को भी नहीं पता था. Exactly. He basically has this one squad in his mind और वो वही हर बार पेलता है मतलब बंदा मर जाए खेलते खेलते. क्रूज के साथ भी वही हुआ था in the second season in first stint में. 14-15 Played Modric. Cruz मॉड्रिच and के साथ Modric. ज्यादा गलत हुआ था. क्रूज भी इंजर मॉड्रिच हो के गया साथ था और खराब हुआ लास्ट. था. अरे मॉड्रिच तो भाई क्लासिको से पहले पता है क्या हुआ? क्लासिको से पहले ही वाज Dead हो गया. इंजर्ड. ही जबरदस्ती bought him in the Dead. classico and he got injured again. And then you have Sergio Ramos as defensive midfielder in the Champions League quarter final semi final. क्या Against. मतलब कुछ भी था भाई वो तो. Exactly. So ये I think that's one of his worst aspects as a manager. I would probably give him a 7 or a 7.5. Obviously, इस season I उसने will काफी किया है. I will give a 6. I will give a 6, not more than that. Perhaps 7 is sort of being very lenient यार. हाँ, मतलब मतलब मैं यार ये उसी के you know हिसाब से सोचा था. इस देख सीजन उसने करा तो है, but is it enough? I don't know. But आकाश में I think 6 एक and a बात half. Let's settle on 6.5. हाँ चलो वो ठीक है, बट स्टिल वन पॉइंट कि अगर कार्लो अगर फकअप करता भी है ना, तो कार्लो के इन गेम मैनेजमेंट इज वेरी गुड. अगर वो उसको दिख रहा है कि कुछ नहीं चल रहा है, इज वेरी क्विक टू डू द चेंजेस, और जो उसके चेंजेस रहते हैं वो काफी इन पॉइंट रहते हैं. I'm not saying his last 1-2 season, but usually maybe if he's making a sub, that sub is actually coming on and doing the things. 2014 देख लो आप, Marcelo Pointao started that game. Marcelo was brought on. Isco was brought on. Isco extra time was brilliant. आपका Chouameni, Kamavinga in 2022, like taking off Modric or Kroos in a big game and bringing on some unknown players like Kamavinga at that time. और Almeria वाली game भी obviously. Subs in game management is very good.
better than Zidane, the in-game management part. Yeah, I agree. Because let's take another case. Juventus second leg in 2017-18. Losing 3-0, Zidane looks clueless out there. I mean, True, true. and the thing is that we are only without Sergio Ramos, right? And हमारी टीम हाँ, calm down कब होती है जब रामोस सारा टनल के उसमें आके गाली देता है, सालों बहन के लोग पागल वागल हो क्या? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद ला दिया आपने. लाइक क्वार्टर फाइनल के बाद नेक्स्ट मैच कौन सा था? बायर्न. फर्स्ट लेग वी वन बट वी वर आउटप्लेड वो हैकनेस की टीम ने. सेकंड लेग पे आए, हैकनेस ने कुछ चेंज नहीं किया, जिडान ने भी कुछ चेंज नहीं किया, और पूरा बर्नाबाउ लेग वाज सेव्ड बाय नावस. कुछ चेंज नहीं हुआ था उस पूरी गेम में. आपको दिखा था फर्स्ट लेग में यू वर डोमिनेटेड, It आपको was दिखा not only सेकंड लेग में saved फर्स्ट by हाफ. भाई सिर्फ saved by नावस नहीं था, उनके कीपर ने भी दिया था, नहीं तो हम बाहर थे. हाँ, वो डिजर्व टू गो आउट अगर दैट राइस ने डे. भाई देख यार तुषार, what you deserve is not correlated to what you get. You get what you get because we have won हाँ, titles which we might not deserve, but then we have lost titles which we 100% deserved. डिजर्व. है ना? यस, I'll just reconnect the internet ठीक है. sort of aching, I ठीक believe. है, शानदार. इसका डेट करना 9.5 6.5 इज ओके राइट? Shantanu is off here. I think so. Yeah, some अच्छा work. शांत. हाँ, तो आप बताओ राज, सही है ये? या आई एग्री विद इट. मतलब जो भी हुआ, क्योंकि 6.5. जिडेन को तो मैंने उतना देखा नहीं था, बट कार्लो का तो आई एग्री विद यू गाइस. मतलब ही हैज दिस प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही, जब से मैंने उसे देखा है. तो या थोड़ा मैं ना हाफ कम कर रहा हूँ, यहाँ से हाफ हटा रहा हूँ, बिकॉज इज इन गेम इज जिडान की इन गेम इज नॉट गुड. ही जस्ट स्टैंड्स देयर लाइक आर्सन वेंगर. एनीबॉडी रिमेंबर्स? हाँ, कार्लो तो अच्छा खासा मतलब साइड से हाँ, करते रहता है प्लेयर्स को गाइड. ये चीज तो है. So next one, defense. आकाश Tushar, वो who's देखते your रहे. pick here? डिफेंस में तो कोई पिक ही नहीं है यार. जिडेन There जिडेन is Zidane is miles ahead, I believe. या obviously ऑब्वियसली. miles ahead, mainly for that 2021 season, COVID Yeah, season. 1920, 1920. Yeah. 2020. Yeah, but Tushar, don't you think it is very ironic? The French guy is better at defending than the Italian. Talent. Right. And it's not like Ancelotti can't defend. He has coached perhaps the greatest line of defenders in the world. Maldini, AC he's मिलान में played with Maldini and Nesta. Baresi, Nesta, and then Sergio Ramos here, right? Pepe and Varane. Chelsea में Terry. John Terry, exactly, was going to say that. And Paul. Thiago Silva as well in Paris. Yeah, PSG. Right. Yeah, I mean Thiago Silva, shout out to that guy यार. मतलब जितना underrated और ignored है ना वो, I think it's sort of criminal towards him. He's much better than मतलब what people will perceive of him 10 years down the line perhaps. Point is COVID Champions League के अलावा वो कुछ जीता नहीं था, so nobody used to rate him. Yeah, Winning that in is PSG true. is Yeah, it's like losing your virginity in a brothel. I mean, so that's defense. I would give 9 to Zidane. 9 to Zidane, and you give 7.5 to 6.5. Ancelotti. No, 6.5 is sort of criminal here. It's not like he's been always terrible. हाँ, he stopped Bayern's At- Pep's Bayern 2-0 goals. Exactly. बट इस सीजन कार्लो ने डिफेंस पे काफी अच्छा काम किया है. लेट्स गिव अ शाउट आउट फॉर दैट टू हिम. Exactly. काफी अच्छा. You know, राज एक बात बताऊंगा मैं, कार्लो एंचेलोटी की टीम जब भी लीग जीतती है ना, तभी उसकी टीम का डिफेंस सॉलिड होता है, नहीं तो बस वो ऐसे ही है. कप कॉम्पिटिशंस यू कैन गेट विदाउट बीइंग लाइक गुड डिफेंडर्स. एवरेज डिफेंडिंग से काम चल जाता है कप कॉम्पिटिशंस में, बिकॉज तुम वो 4-2 मेंटालिटी से जाते हो कि तुम 2 मारो हम 4 मार लेंगे, सही है बात ना. है. लीग में ये काम नहीं करता कभी कभी, आई बिलीव, बिकॉज 38 गेम्स लॉन्ग टाइम, तो समटाइम्स यू नॉट एबल टू स्कोर दैट मेनी गोल्स इन अ गेम. सही. एग्री. एंड इवन इस साल जैसे उसने एस किया है कार्लो ने मिडफील्ड डायमंड में,
मैं अभी थोड़ा बहुत कार्लो के बारे में पढ़ रहा था, एंड द थिंग इज कि कार्लो ने स्टार्ट ही डायमंड से किया था। 442 उसका पहले जिस कोच के अंडर उसने काम किया था, आई फॉरगॉट हिज नेम, ठीक है, उसी ने स्टार्ट किया था 442, एंड उसी के अंडर कार्लो ने अरी सीखा अरी 442 अरीगो में अरी खिलाना। अरी अरीगो साची हाँ 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 हाँ, यही 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 है। अरीगो साची तो था। एग्जैक्टली तो जो कार्लो कर रहा है, इट्स बेसिकली हिम गेटिंग बैक टू हिज रूट्स। तो लाइक इस साल मतलब वो सब पढ़ने के बाद आई फेल्ट कि हमारे पास चांसेस है, एक्चुअली काफी अच्छे चांसेस है। वैसे इंटरनेशनल ब्रेक में तो इंग्लैंड वालों ने बहुत इंजरीज दिखा दी, सिटी वालों ने साले रो रहे हैं बैठ के, रूबन अरे डियाज भी कुछ नहीं चला है गया था। भाई, कुछ नहीं है, ये हरामजादे हैं। अभी पता है क्या हाँ, होगा, ये पेप के दल्ले हैं साले, ये इंटरनेशनल टीम से अपनी गांड मराते हैं। एवरी सिटी प्लेयर, नेम वन सिटी प्लेयर हु इज हाफ डिसेंट विद हिज नेशनल टीम, सब बहन के लौड़े हैं एक नंबर के। रूबन इडरसन डियाज बेंच इडरसन तो दिखता भी नहीं है अब। बेंच पे बैठता है भाई वो ब्राजील में। एलिसन ने बेंच कर सही रखा है बात उसको वहां है पे। एकदम। रूबन डियाज और जीसस जीसस वैलेहो फॉर रियल मैड्रिड, रूबन डियाज फॉर पोर्चुगल, सिमिलर क्वालिटी, एब्सोल्यूट शिट दोनों तरफ। ठीक है, बना तो चलो आपको। their best player is Haaland has not qualified for the Euros in a Norwegian team which is apparently golden generation. ओडेगार्ड हालैंड Yeah. है, वो बेंच यूरो के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। द सेकंड बेस्ट प्लेयर और परहैप्स फॉर सम द बेस्ट प्लेयर, दिस गाय केविन दे De ब्रुयने। Bruyne. भाई you know how to stop Kevin De Bruyne? Put him in a Belgium shirt and he won't beat anyone for बेल्जियम years. से। पता नहीं क्या Exactly. दिक्कत है इन लोगों के साथ, मतलब ऐसा लगता है कि इनकी पर्सनल कुछ मतलब ग्रजेस है अपनी मेरा नेशनल ना टीम के मे, साथ। मेरा ना एक फ्लैश पॉइंट है, people compare De Bruyne with Modric and I'm like dude, Modric is not shit with his national team. सही बात है। Modric is national pride and De Bruyne is national shame, है ना? भाई बोल ही दिया यार, याद बोल है, ही दिया, अब तो क्या ही है। मैं देखा नहीं था वैसे, कमेंट बट ऑफेंस बोल पे दिया। आते चलो, हैं। ऑफेंस भाई एंचेलोटी 9, जिदान यार 7 तो नहीं दे सकते यार, बोथ 9 यार, व्हाई नॉट? इक्वल कर सकते हैं, बट हाँ। नो 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 नहीं नो नहीं, नो यार, इक्वल इक्वल नहीं है, पता है इक्वल। एंचेलोटी के लिए गलत हो जाएगा यार। एंचेलोटी मच मोर अटैकिंग, गिव एंचेलोटी 9.5 भाई। यू डिडंट सी दोस 7 nils 8 nils 9 ones 10 twos 2014। अंडर जिदान, है ना? जिडान के मतलब पास वो अटैक भी था, इसलिए ही वाज सो एफिशिएंट। कार्लो ने काम ऐसी किया है बात। हाँ, काफी। with अच्छा। Ancelotti yeah, you should give 9.5, yeah, very good, very good, perfect. हाँ, ये तो एक मतलब ये पॉइंट तो ऑफ एस्टैब्लिश एप्लाई है। फैक्ट है। डिफेंस में ज्यादा गैप था, दैट इज व्हाई कि कहते हैं परहैप्स जिदान वन द लीग टाइटल विद परहैप्स इवन इंफीरियर स्क्वाड्स, हम्म। है ना? और Ancelotti losing last year is actually much worse than losing a league title in 2017-18 or 19-20 or 21, right? नहीं, Because दैट वैसे वाज अ वेरी लूजिंग टू पैथेटिक। एटलेटिको। यार हाँ, तुषार, losing to- एथलेटिको से हारना 2021 में ज्यादा खराब था या फिर लास्ट ईयर एकदम टट्टी लीग में हारना ज्यादा खराब था? ऐसे सोच। ठीक है, ठीक है, कह नहीं सकते हो। मतलब आई एम आस्किंग, यू कैन ऑब्वियसली हैव अ हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यार, आई एम टोटली इन फॉर इट। हाँ, मतलब बारसा से हारना इज लाइक, मतलब मैंने तो जब से लीग देखना शुरू करा है ओनली वन 3 टाइम्स ना, इस साल फोर्थ टाइम होगा। तो मेरे लिए लीग जीतना वाज कितनी नॉट बार बीन जीते लाइक हैं हम बारसा को बेंच? लीग जीतना इज अ बिग थिंग। मैंने कहीं देखा लीग जीतते हुए भाई। हाँ मतलब यार ठीक है, बट देन अगेन हाँ, यार 2021 एटलेटिको वी से, हैड बट द वे a वी लॉस्ट shitload टू of injuries एटलेटिको as well. वाज वेरी बैड। हाँ, 2021 की बात हो रही है ना हाँ, हाँ, 2021 की यस। भाई? लास्ट डे तक वो जिस स्क्वाड को लेके गया था, लास्ट विनीसियस वाज लाइक 7 goals in 50 games, ठीक है? या रोड्रिगो का आई थिंक दूसरा ही सीजन था। बेंजेमा वाज आवर ओनली स्ट्राइकर एंड वी डिडंट हैव, भाई स्क्वाड का कैलिबर आई भी थिंक देख। एंड कैसेमिरो वाज आवर सेकंड हाईएस्ट स्कोर हाँ पता है वो। दैट सीजन। एंड यू नो वी डिडंट हैव प्रॉपर सेंटर बैक्स एज वेल, रामोस और अंत दोनों टांग तोड़वा के बैठे हुए थे पूरे सीजन। हम्म। राइट, Now राइट, राइट, compare राइट। that and compare our team, last year's team. Last year's लास्ट team is सीजन basically you reduce Bellingham, add Benzema. And let's just assume Benzema is not completely fit. He plays 60-70% of the games. But then again, you सी compare it with like fucking Barcelona. Yeah? Barcelona's squad last year was not world beating, to be very honest. Yeah, they were out in Europa League and Frankfurt fucked them. राइट, राइट। है ना? So I think
Ancelotti has lost more league titles than के कहते हैं Zidane. 14-15 we Zidane. should have won the league. Champions League and Copa del Rey I can understand यार, कुछ भी हो सकता है उसमें, तो कब कंपटीशन है, कब साला कोई आके ढप्पा कर जाए, you never know. Big भाई देखो, games. 5 लोग देख रहे हैं, मुझे पता है कि साले सब सब्सक्राइब्ड हो, लाइक कर दो बहनचो, 17 लाइक्स हैं इस पे खाली, मैंने आखिरी बार जब देखा था। मैं तो पोस्ट होते ही लाइक कर देता हूँ लोग भाई। देख रहे हैं बस, अरे कोई काफी बात लोग नहीं यार, पार्टिसिपेशन। नहीं अरे सब आई, तुषार, दिल्ली जीत रही है क्या? लौड़ा दिल्ली जीत रही है, दिल्ली कभी नहीं जीतती भाई, दिल्ली बस दुख देती है जब जब स्ट्रीम शुरू हुई थी तब तो जीत रही थी, क्या हुआ? भाई। क्या मारा चल रहा है बेंचो स्कोर? किसी ने पकड़ के, 180-90 रन हो गया, रियान पराग मार गया भाई। इतने झाटू लोगों से पिटती है ना दिल्ली की टीम, शर्म आती है बोल के। अरे यार, okay. इनका नाम बदल दो भाई, दिल्ली कैपिटल्स नहीं, दिल्ली के विकेट दल्ले। पे गिर गया। थे तो पहले डीडी। दिल्ली के दल्ले हैं अश्विन भाई भी ये। मार के चला गया भाई इनको। हाँ 30 रन तो अश्विन ने मारे बेंचो। भाई हट बेंचो। बिग गेम्स पे आते चलो हैं। बिग गेम्स पे आते हैं, चलो। हाँ, तुषार, ओपनिंग कमेंट्स। Zidane has not lost a big game tie other than City. तो Yeah. और And Ancelotti कार्लो, has lost against City, but much worse. yeah, and Carlo का record versus Barca is never good, versus Simeone is never good. सिमियोने के अगेंस्ट तो बहुत, मतलब स्पेशली खराब है। Right. Simeone, बिग Barca, गेम्स में जिडेन इज बेटर ओवर कार्लो। देखो, हाँ one वही, thing I would like to put before I say anything else, कि both of them in finals are good because finals Real Madrid खेलती है तो जीती जाती है। true. This thing you have to keep aside because ये तो भाई बहुत ही वो बात है कि फाइनल तो अपन जीत ही जाते हैं, तो उसको तुम साइड कर दो। बिकॉज कोई बोलेगा 2014 में यूसीएल फाइनल था एथलेटिको से, ये तो जीत गया, सिमियोनी फैक्टर कहाँ था तब, है ना। बट यू हैव टू लुक लाइक एट द एंटायर पिक्चर। रिकॉर्ड अगेंस्ट सिमियोनी आई थिंक बहुत ज्यादा खराब नहीं है, कभी कभी ओवर होता है, क्योंकि तेरे को पता है 2014 में ना 2 लेग्स थे कोपा डेल रे के, और हम 5-0 एग्रीगेट में जीते थे शायद अगेंस्ट Right. एथलेटिको, है ना। तो 2 मैचेस वहां जीता, लेकिन लीग में एथलेटिको का रेनेसॉ पता है कब आया? जब मोरिनियो का फाइनल हार गया था 2013 में। For उससे India, पहले एथलेटिको उससे पहले एथलेटिको 14-15 साल से रियल मैड्रिड जीती ही नहीं थी। 15 साल से दे हैड नॉट डिफीटेड रियल मैड्रिड, ऐसा कुछ रिकॉर्ड था उनका और हमारे 98 भी या पन्ना 96 में, बहुत थे। और हमारे भी बने हुए थे कप फाइनल। उसके बाद से ना एथलेटिको का रिसर्जेंस आया, एंड देन दे बीट अस इन द लीग इन 13-14। आई थिंक कैल्डरॉन में ड्रॉ था, यहाँ पे हार गए थे। 14-15 में जो हमारा 22 गेम्स का विनिंग स्ट्रीक था, वो भी एथलेटिको ने ही तोड़ा था, 2-1। आर्दा तुरान ने मारा था शायद विनर। इस बार भी तो एंसेलोटी एटलेटिको ने ही अपना वो तोड़ा है, विनिंग स्ट्रीक। जो हारे हैं उसी के खिलाफ हारे हैं, एटलेटिको के इवन खिलाफ। यार, अभी आकाश कह रहा है शावी की बारसा, शावी की बारसा। इवन शावी की बारसा वर्सेस कार्लो की दिस मैड्रिड इक्वल हेड टू हेड है। कोई होना चाहिए शावी की बारसा के साथ इक्वल हेड टू हेड। एग्जैक्टली, शावी की बारसा को तो पकड़ के मारना चाहिए भाई। एग्जैक्टली, नो आई एम नॉट इवन उस टीम में किडिंग कुछ अबाउट है दिस नहीं। यार। 21-22 में शावी कोच था इनका। बाद में आया था ना जब हार रहे थे लोग। नहीं 2.5 साल हो 21-22 गए में भाई। बन गया था, मतलब 4-0 जब ये जीते थे बने पे ऊपर, फालतू वाला क्लासिको, हाँ हाँ। हाँ। तो शावी अरे कोच था, है ना। उसके बाद हाँ, उसके बाद वो गावी वाला क्लासिको जिसमें गावी से हरवा दिया, सुपर वो तो कोपा। 3-1 सुपर कोपा तो मतलब चूतिया बातें हैं यार, ये सुपर कोपा डेल Still रे, यू नो हाउ भाई, फील अबाउट दिस, बट स्टिल यू शुड नॉट लूज टू दैट टीम, दे आर योर राइवल्स। एंड ये बिग सही गेम्स का बात है। जो ये क्वेश्चन है ना, ये इसीलिए है बिकॉज यार देखो, मे बी समटाइम्स दीज बिग गेम्स आर नॉट अबाउट द लीग। कभी कभी क्लासिको आता है और एक टीम लीग जीत चुकी होती है, हम 7 पॉइंट आगे हैं, अगर हम 8-9 पॉइंट आगे होंगे क्लासिको में ना, द क्लासिको इज एज गुड एज नथिंग, डेड रबर ही है वो फिर, है ना। सही बात। लेकिन फिर भी भाई इट्स अबाउट बोस्टिंग राइट्स ना। बारसा डिड दे प्लेड यूरोपा लीग दैट सीजन, बट फिर भी बेंच इतनी चौड़ में चल रहे थे, हम 4-0 जीत गए हैं, मतलब दैट्स नॉट अ ट्रॉफी एट द एंड ऑफ द डे। In 13-14, Ancelotti lost both Clásicos. 14-15, he won one and lost one in the league. The more clutch Clásico ना, Zidane क्लच कर जाता था, ये क्लच नहीं करता था, ये तो मैंने नोटिस करा है।
हालांकि क्लासिको में हमारा रिसेंट लास्ट 10 साल का रिकॉर्ड तो बहुत ही खराब है, गिवन के कहते हैं वी हैड अ गुड लीड ओवर बार्सिलोना बिफोर 2008 बेसिकली. But Carlo won the two most important Clásicos, यार. 2013 final and 2022 semi-final. वो Copa del तो Rey. मोस्ट क्लच मूवमेंट Copa है. del Rey. Zidane, bring your Copa del Rey होता है. बट यार 14-15 में जो हम 2-1 हारे थे ना 14-15 में, जिसमें बेंजेमा ने वो बैक हील करा था, रोनाल्डो ने टॉप अप करा था और 2-1 हम हार गए थे, सुआरेज ने गोल मारा था शायद विनर. Right. हाँ. 14-15 अप्रैल आई थिंक 21 अप्रैल 2015 को मैच था. इतना गंदा मैच था ना, मेरे को डेट भी याद है. ठीक है, इस तो बार भी दैट वाज अ 21 को वेरी ही हो रहा क्लच है क्लासिको. क्लासिको. फिर आ रहेंगे बेंच. तो क्या कहते हैं यार, वो क्लासिको जो था ना, आई विल टेल यू, had we won that classico or drawn, we would have easily won the league. We were 4 points ahead. And एक Carlo point से Ancelotti went, and you know, in this case, na, he did the big mistake of going against MSN to play a draw. You don't play a draw against such a potent team. मतलब you also had Bale, Benzema, Ronaldo यार, मतलब तुम ऐसे ही थोड़ी थे, ऐसा थोड़ी था कि तुम बेकार टीम लेके जा रहे हो. And you don't feel, सही बात है. you don't make that team feel underdogs. जो टीम 8-1 9-1 जीत रही है, 7-0 6-0 मजाक मजाक में, उसको तुम ऐसे नहीं कर सकते कि अब तुम अचानक से भाई तुम सब पीछे खड़े हो जाओ. दैट्स नॉट द वे टू डू. चोर कताई की थी साला सुआरेज डाइविंग क्वीन. अरे यार वो तो सबको पता ही है, बट एट द एंड ऑफ द डे गलती तो कुछ क्लासिको में इसमें तो दिस क्लियरली आवर मिस्टेक. एंड 14-15 के सेकंड क्लासिको में that was perhaps the biggest classico, मतलब most significant classico which we have lost in recent years, because वो trophyless translation था सीधा, है ना. आई वो थिंक था कार्लो को यूवेंट 7-8. नहीं यार 8 यार भी नहीं, because आ, कार्लो की wins सा- बहुत important रही है. यार देख राज 7-8 देना ना बहुत ही मतलब क्रूअल हो जाएगा, बिकॉज फाइनल तो सारे ही जीतता है ना यार ये. हाँ मतलब ये when it भी है. matters the most, then ही both of परफॉर्म्स, ही them have come डिलीवर्स. through. Exactly. और जो इसकी Perhaps if चैंपियंस लीग perhaps यार चैंपियंस तुषार लीग मान बिग ले, गेम्स देख. हाँ. इसमें तीसरा बंदा अगर मोरिनियो होता है, वी वुडंट हैव बीन एबल टू गिव हिम 9-9.5. उसको कम देना पड़ता, बिकॉज बहुत क्लच स्टेजेस में हम गंदी तरह हारे हैं. I'm not against Mourinho. Obviously, everybody knows what's our take on Mourinho, but he was not this good in big games than either of these two. यही तो डिफरेंस है मतलब कप ट्रॉफीज और नॉट विनिंग दोस ट्रॉफीज में. मतलब ऑब्वियसली एरास डिफरेंट हैं और यू कैन टॉक अबाउट मतलब मल्टीपल लेयर्स हैं इस चीज में. बट आई थिंक 9.5 is like fair enough, because Zidane na, I think there's only one Clasico in which Zidane really got humiliated. That was like the 3-0 we lost at Bernabeu. इसमें 3-0 कारवाहाल हैंडबॉल खेलने लग गया था पहले गोल के बाद कि अब तो साला हाथ ही रोक लेता हूँ, 2-0 अभी हो फिर गया तो से लौटा गोल नहीं किया जीतेंगे. था उसने, अरे भाई ब्राजील के मत खिलाफ पूछ. किया था उसने. हाँ. रेड कार्ड मिला था, मैंने मैच भी नहीं देखा नहीं, आज. रेड कार्ड नहीं मिला था, बट हाँ पेनल्टी दे दी थी उसने. वो मैच अच्छा ड्रॉ ही उसके चक्कर में. अच्छा वैसे एंड्रिक यार काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंटरनेशनल में. करेंगे भाई, उसकी बात पॉड पे करेंगे मंडे को. यस. अभी ये खत्म कर लेते हैं तो यार तुषार भाई, आई थिंक दिस इज इट. टोटल एवरेज ले लो एक बार, एवरेज ले लो इसका, या फिर एक काम करो सम डिवाइड बाय 10 कर दो ना दोनों जगह. अरे मैंने वी विल वो नहीं हैव किया लाइक, यार. नंबर्स नहीं क्या है नहीं इधर, किया टेक्स्ट फॉर्मेट में है सारे. इट्स नॉट नंबर्स. ये क्या बीटी है अरे वो भाई, कर फिर यार कुछ कन्वर्ट टू नंबर्स कर देना. अरे मेरे को एक्सेस चलाना नहीं आता है. रुक जाओ. अरे भाई इस पूरे को सिलेक्ट कर, जिदान के नीचे सिलेक्ट कर. हाँ बगल वाला भी ले ले, बगल वाले भी ले लेना साथ में. अच्छा. कंट्रोल शिफ्ट नीचे तक ले जा. हाँ ले लिया. अब ऊपर नंबर है ना, वो ये ड्रॉप डाउन देख हेल्प के नीचे. ओके. सेंसिटिविटी के बगल में. हाँ 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 नीचे ड्रॉप डाउन करके नंबर कर दे, अरे नाइस. एंटर दबा दे. अरे यार कार्लो सारा के select ऊपर नहीं वाले हुआ. मार्क्स चले गए. अरे नहीं गए भाई. हाँ भाई उसके साथ वाले मार्क्स हटा दी तूने. अच्छा नहीं पीछे चला गया है भाई. साइड में. अरे यार अरे मैथ्स आती है अबे मेरे को यार. एक काम कर यार. अरे मैं प्लस दस- कर रहा हूँ ऐसे ही. हाँ हाँ. क्या बकचोदी है, मेरे को एक्सेस दे दे यार, मैं कर देता एक्सेल हूँ. सिखा रहे हैं अभी बैठ के.
वैंचो दिया बोल रहे हैं साले, इनकी एक्सेल वैक्सेल की क्लास भी लग रही है। अरे रुक यार, 8, मैं करता हूँ मैं। 9, 7.8 आए हैं जिडेन के। मतलब ही नहीं बनता वैंचो, मतलब ही नहीं बनता, इतने सारे 9 8 है वैंचो, 7.8 हो ही नहीं सकता। डिवाइडेड बाय 10 किया यार, शायद एक आध भाई वो छूट गया हो, देख ना कुड बी कितने, पॉसिबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 से डिवाइड कर। 78 डिवाइड बाय 9 है ना, मतलब टोटल पॉइंट्स उसके। क्या सी किधर अच्छा है? सर, ओके हाँ, 9 10 डिवाइडेड बाय 9 करना है। प्लस 8.5 प्लस 8 प्लस 7.5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8.5 प्लस 8.4 है कार्लो का, 9.5 प्लस 9। एंड 8.6 जिडेन। भाई ये 88.5 कैसे आया तेरा? अरे टोटल तो जिडेन का बताओ। 88, हाँ 8.6 है, 78 डिवाइडेड बाय 9, और कार्लो का अच्छा 8.4। कानून तो भाई फर्स्ट। टकला टकला जीत गया है भाई। गाइस व्हाट डू यू थिंक? काफी क्यूस। यार इस चीज में वैसे जिडेन को हमें ये एडवांटेज देना चाहिए कि जब वो एज अ कोच आया मैड्रिड में, उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, वेरएस कार्लो के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, ऑलमोस्ट 10-15 साल का। तो भाई जिडेन ने कार्लो ऑब्वियसली एंचेलोटी बहुत तो अच्छा बेंचो परफॉर्म किया था। नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है एंचेलोटी पे। आई थिंक एलेक्स फर्ग्यूसन पे ही ज्यादा था, जब मतलब दे वर कंटेम्परेरीज। हम्म। नहीं तो एंचेलोटी तो 90 से मैनेज कर रहा है। आई थिंक वेंगर वाज आल्सो बिफोर, ही स्टार्टेड बिफोर एंचेलोटी, बट देन बोथ ऑफ देम हैव रिटायर्ड लाइक ईयर्स बैक। इसका तो 10 साल पहले ही खत्म, 11 साल पहले ही खत्म हो गया ना एलेक्स फर्ग्यूसन सही का। बात है। तो ही स्टार्टेड इन 86 टू 2013। ज्यादा कितने साल हुए? 26 साल, 26 27 साल। कार्लो भी रिटायरमेंट फॉर्म में ही था यार, जो उन्होंने उसको ले लिया जब उन्होंने लिया उसको। 1980 1998 में कार्लो ने स्टार्ट किया था कोचिंग करियर अपना। बट यार पता है तुषार, अगर तू हिसाब देखेगा ना, तो एलेक्स फर्ग्यूसन आल्सो स्टार्टेड बिफोर 86। ही वाज विद एबरडीन इन स्कॉटलैंड। ही वन देम सम टाइटल्स एज वेल, ही इज फेमस फॉर दैट। बट लेकिन अरे यार एंचेलोटी को ना टीम में बेंचेस जबरदस्त से जबरदस्त मिली है। इज नॉट कोच स्मॉल टीम्स एंड ही मतलब ऑब्वियसली लेटर इन करियर वो एवर्टन नेपोली को तुम बोल सकते हो, लेकिन भाई हम्म। पांचों पांचों लीग में उसने ना टॉप की टीमें कोच करी हैं इन एवरी लीग। बायर्न म्यूनिख को कोच सही करा है, बात है। पीएसजी को कोच करा है, चेल्सी को कोच करा है साला, रियल मैड्रिड को कोच मैड्रिड करा को। है, yes, और एसी मिलान मतलब एसी मिलान गॉडफादर भाई। मतलब परहैप्स legend. एसी मिलान की तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोचेस में आता है। सही बात Greatest है। तो coaches, latest players. ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में तो यार सॉर्ट ऑफ इन मतलब एट द एंड ऑफ द डे यार, तू इसको क्या कहते हैं, लूकास वास्कोस को रियल मैड्रिड ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में थोड़ी डाल देगा जस्ट बिकॉज़ ही वन अ लॉट। वो भी है ना, वी ऑल नो ओजिल इज अहेड सही ऑफ हिम इन बात द है। लिस्ट। वैसे लिस्ट में तो सबसे ऊपर लूकास वास्कोस का नाम ही लिखा जाएगा बिकॉज़ गोट। Napoli के बाद एवर्टन ब्रो। नापोली अरे वैसे एवर्टन या नहीं आती भाई मेरे को एक्सेल भाई, मैं वर्किंग हूँ, मेरा ऑफिस लैपटॉप है ये, फिर भी मेरे को एक्सेल चलानी नहीं आती है। सही है जस्ट टू भाई, ब्रैग नौकरी अबाउट के माय बाद एक्सेल चलानी भी काम नहीं नहीं है। चाहिए। हाँ, एनालिस्ट वाला काम नहीं है भाई, अपना अच्छा काम है। बढ़िया है भाई। अरे चलो बट तो यार जिदान इज वन एंड इट इज ऑब्वियसली वेरी प्रणय भाई क्लोज, मतलब अगर 3 पॉडकास्ट से क्वेश्चन कर रहे हैं, जस्ट लेट्स एंड विद दिस क्वेश्चन। चलो सब अपना आंसर करो। अच्छा। राज हाँ। रेट कर आई थिंक मैं कार्लो की तरफ थोड़ा सा ज्यादा रहूंगा देन जिडेन, भाई। क्योंकि मैंने कार्लो को ज्यादा देखा है। दैट्स माय पर्सनल बायस, अदरवाइज जिडेन इज मच बेटर, नॉट मच बट कंपैरेटिवली बेटर। भाई गिव मी अ 1 2 3, कहानी नहीं सुननी। ठीक है, कार्लो ऊपर है। और जोसे, जोसे भी है भाई, 3 लोग हैं। जो कार्लो, जिडेन एंड देन जोजे। ओके तुषार। यार बड़ा गंदा क्वेश्चन है, मतलब आई हाँ यार वांटेड, मतलब मैंने ये जर्सी इसलिए पहनी है शो में बिकॉज आई नो सिडान कार्लो का है एंड आई वांटेड टू एंड विद, बट मेरी फेवरेट टीम ये वाली जर्सी वाली है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, बट हाँ, प्रणय आंसर मिल गया है, मेरी फेवरेट टीम ये वाली है, बट सिडान, सॉरी, Mourinho hasn't won anything, और कार्लो इज माय फेवरेट टीम टू वॉच, बट जो ट्रॉफीज का मजा मेरे को जिडान के एरा में आया, आई एम नॉट सेइंग थ्री पीट, आई एम सेइंग द लीग्स। एज अ एशियन फैन काश भाई, मेरे को 38 मैचेस, जो मेरी मेहनत है 38 मैचेस जागना,
वो कभी जिडेन में वसूल मजा नहीं आया होती वर्किंग थी। वो। वर्किंग लाइफ में, और वो सारे हाँ, हेल्प होना, मतलब एज अ चैंपियंस लीग फॉर एशियन फैन मेरे लिए क्या है, 8 नाइट्स, और मैं किसके आगे ब्रैक करने 8 वाला हूँ। नाइट्स हाँ, एग्जैक्टली। और किसके आगे ब्रैक करने वाला हूँ उन नाइट्स को। So for that reason, I go with Zidane अगेन अगेन first, Carlo second, and Mourinho first. Mourinho third. थर्ड। मोरिनियो ने मतलब एक बहुत ही अंडररेटेड काम किया था, वो था कि उसने सारे मेन प्लेयर्स लेके आए जो कि कार्लो और जिडेन ने यूज किए टीम में Mentality इंट्रोड्यूस instill किए। करेगा. Yeah. हाँ वही, बट I ठीक है। will give He you laid a the ground for very it. different, matlab, there are I think three ways to make this arrangement, and my arrangement will be different. It will be Zidane, then Carlo, then Jose. I mean, Hmm. if you're मैंने talking भी about चलो. impact of the हाँ. coach, obviously Jose Mourinho का impact सबसे ज्यादा है. I'll tell you, Jose Mourinho का ना क्रिकेट में अगर तुम equivalent ढूंढने जा रहे हो ना, सौरव गांगुली and his impact in the 2011 World Cup, ऐसे देख सकते हो तुम, है ना? Right. He retired in 2008, but all the guys he basically introduced in the team, gave them the chances. They came through later on. Most of them, मतलब a lot of मेंटालिटी them, मतलब मॉन्स्टर्स। Yuvraj Singh, Zaheer Khan, everyone was like Ganguly's thing. And सही बात है। Jose Mourinho, when the team Jose Mourinho inherited, and the team Ancelotti inherited, and the team Zidane inherited, there are three very different teams. I mean, the team Ancelotti initially inherited had a very crumbling dressing room, and Mourinho का जो क्या कहते हैं, Mourinho is an antibiotic भाई, उसका साइड इफेक्ट होता है, तो साइड इफेक्ट के साथ ही मिला था इसको, but still the team had the belief कि हम जीत सकते हैं. The team Mourinho inherited was a team of मतलब superstars, but the guys who basically saw Barcelona and thought कि हम कभी नहीं जीतेंगे. मतलब पेलेग्रिनी के अंदर तो लगता था कि भाई इनको यकीन ही नहीं है कि ये जीत सकते हैं, है ना, सही बात अगेंस्ट है। बार्सिलोना, अगेंस्ट इन दोस बिग गेम्स. तो उसके बाद क्या कहते हैं, these are three differences I would like to talk. So yeah, that is it. चलो यार, I'll be on my way. हाँ, एंड करते हैं यस, ऐसे. एंड गाइस वन मोर थिंग, फर्स्ट को हमारा मैच है तो प्लीज बी देयर for the watch along. And yeah, that's it for Yeah. this time. We'll see you in the next episode of Vault. And yeah, chalo.